Good morning, my dear juniors. I hope you all are fine with the places of God. Now, आज हम स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट का यानी मैनेजिंग स्ट्रेस BPCS 186 का फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस? So hence Sele 1923 describes stress as a response of the body to certain demand that is made on it, and he further stated that this response was not specific. So another scientist in 1998 defined stress as arousal of mind and the body in response to demand made of them. ये तो सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं. एक्चुअली में this is not the onlyest definition of stress. Stress means any kind of uneven thing happening. Okay, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं और जिस चीज़ में अगर कोई चीज़ इशू प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसने उस फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, उस काम के फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, उसकी स्पीड को डिस्टर्ब कर दिया एंड हमें फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा. दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस. एंड इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मे बी अ पर्टिकुलर थिंग बी स्ट्रेस फॉर यू एंड इट मे नॉट बी स्ट्रेस फॉर मी. सो ये पर्सन टू पर्सन ईच पर्सनस टू पर्सन भी मैटर करेगा एंड पर्सन के अकॉर्डिंग में जो एज लिमिट है कि चाइल्ड के लिए कुछ और हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ और हो सकते हैं, जो बिजनेस मैन है उनके लिए कुछ और हो सकता है. सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वेरी कर सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि सारा स्ट्रेस ख़राब ही हो. कुछ स्ट्रेस जो ख़राब ना हो, जो नॉर्मल हो, उसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं. कुछ जो हार्मफुल इफेक्ट रखते हो, जो नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं, उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं. सो कुछ स्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत हाई लेवल के होते हैं एंड वो हमारी बॉडी को हार्म भी करते हैं. उससे हमारा हार्ट में इशू प्रॉब्लम हो सकता है एंड बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इलनेस हो सकता है. तो वैसा स्ट्रेस इज़ वेरी हार्मफुल स्ट्रेस, उसको ही डिस्ट्रेस भी बोलते हैं. तो यही सब है अबाउट स्ट्रेस. नाउ question number 2, what is new stress? So when stress is not helpful or nor harmful, it is described as new stress. जैसे कि मैंने कहा कि if it is harmful then it will be distress, and if it is not harmful it is just quite normal, so it will be called as you stress. So अगर normal है तो you stress, अगर harmful है तो distress. तो अगर harmful भी नहीं है और helpful भी नहीं है तो उसको बोलेंगे new stress. If it is neither harmful nor helpful then it will be called as new stress. What is the congenitive symptoms of stress? So the congenitive symptoms of stress related to stress include the worrying, constantly experiencing racing throughout, lack of organizations in thinking, forgetting, not able to focus, lack of judgment or poor judgment, and also the pessimism. So basically, what is the symptoms of congenitive symptoms of stress? Congenitive symptoms of stress जो है उसमें आपका चिंता करना, वर्रिंग आ रहा है, कोई नया चीज़ एक्सपीरियंस करना, कंपटीशन करना, या समथिंग विच आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे हो, जजमेंट या पुअर जजमेंट होना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इज़ द रीज़न फॉर कॉन्जेनाइटिव सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. कॉन्जेनाइटिव सिम्टम्स को हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी बोल सकते हैं. यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी जहाँ पर कॉन्जेनाइटिव सिम्टम्स स्ट्रेस के आएंगे कि वरिंग हो जाना, फिर एक्सपीरियंसिंग रेशिंग थॉट्स एंड जैसे कंपटीशन का भावना कि सबसे आगे निकलना है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंकिंग, आपकी थिंकिंग में कोई थिंकिंग जो है वो उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, परफेक्ट नहीं है, फिर फोकस नहीं कर पाना, जजमेंट या पुअर जजमेंट होना. दीज आर द रीजंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कॉन्जेनाइटिव stress. Now explain the physical symptoms of stress. What is the physical symptoms of stress? The physical symptoms of stress include low level of energy, stomach upset, headache, and the migraine pain and ache, chest pain, rapid heartbeat, lack of sleep, dryness in mouth, experiencing tension in muscles, and frequent infections, and so on. So physical symptoms of stress है. Physical symptoms होगा तो it will definitely affect your something बॉडी रिलेटेड. लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा डिजीज़ रिलेटेड है, जैसे कि चेस्ट पेन होना, हार्ट बीट रैपिड हो जाना, स्लिप, फिर माइग्रेन, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ हेडेक, फिर हेडेक होना, स्टमक अपसेट. तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पे है. लो एनर्जी लेवल, इफ़ एनर्जी लेवल इज़ लो पर्सन कैन नॉट परफॉर्म हिज वर्क विद 100% एफिशिएंसी. सो एवरीथिंग इज़ लाइक यहाँ पे बॉडी इफेक्ट हो रहा है, बॉडी का फंक्शनिंग इफेक्ट हो रहा है एंड बहुत सारी डिजीज़
मतलब डिजीज़ वी कैन नॉट से, बट वी कैन से इट कि थोड़ा सा अनईजीनेस के सिम्टम्स हैं, जैसे कि हेडेक हो जाना, माइग्रेन होना, फिर चेस्ट पेन, हार्ट बीट का रैपिड हो जाना, लैक ऑफ स्लीप, ड्राइनेस इन माउथ. सो दीज आर दी few symptoms of few physical symptoms of stress. Now, what is frustration? Frustration can be described as occurring when a goal oriented behavior of an individual is thwarted. So what is frustration? Can we describe occurring when goal oriented behavior of an individual is thwarted? तो frustration basically, तो उसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि कोई भी इंसान है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी स्टूडेंट है, उन्होंने कोई चीज़ एक्सपेक्ट किया, ही हैज़ एक्सपेक्टेड समथिंग, ही हैज़ एक्सपेक्टेड 99% मार्क्स. इफ ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही हैज़ एक्सपेक्टेड अ प्रमोशन. एंड वेरियस पर्सनस, अलग अलग पर्सनस के अलग अलग कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे. तो वो एक्सपेक्टेशंस जब उनका पूरा नहीं हुआ, देन व्हाट इज़ क्रिएटेड इज़ फ्रस्ट्रेशन. तो वो है फ्रस्ट्रेशन. कि फॉर एग्जांपल रवि जो है वो प्रमोशन एक्सपेक्ट किया था, बट उसको प्रमोशन मिला ही नहीं. सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपीरियंस्ड फ्रस्ट्रेशन. दैट विल बी कॉल्ड एज कि ही एक्सपीरियंस्ड फ्रस्ट्रेशंस. मीन्स उन्होंने वो फ्रस्ट्रेट हुए. सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके भी, अलग अलग पर्सनस के लिए वेरी करेंगे. स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेक्टेशंस अलग होगा तो उसका फ्रस्ट्रेशंस भी अलग होगा. फॉर अ बिजनेसमैन, फॉर अ हाउस वाइफ, डिफरेंट पीपल्स, इट विल हैव डिफरेंट रीजंस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस. Now explain stress as a result of social condition. Social conditions. Stress as a result of social conditions. Social conditions in which the individual exists can also lead to the development of stress, and these social conditions can be related to the crowding, discrimination, technological development, and changes, the pollution, and so on. The individual today exists in the world that is much more complex, and this is globalizations, increased competitions, and high amount of social pressure. तो अगर सोशल कंडीशन में हम स्ट्रेस की बात करें, तो सोशल का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सोशल का मतलब इट इज़ नॉट लिमिटेड टू योर पर्टिकुलर एरिया. मीन्स हमारा सिर्फ घर, सिर्फ वो जोन जहाँ पे सिर्फ हम लोग रह रहे हैं, वो जोन नहीं होता. इफ़ इट इज़ अ सोशल कंडीशन, तो वहाँ पे ट्रैफिक्स भी, वहाँ पे रोड आ सकता है, वहाँ पे ऑफिस आ सकता है, वहाँ पे कोई भी सोशल प्लेस आ सकता है. सो इफ़ दैट प्लेस इज़ गिविंग अस सम स्ट्रेस, so that will be the reason of stress as a result of social conditions. So examples is also given here. The very first is crowding, definitely social place पे होना है. फिर discrimination, technical development, traffics को भी ले सकते हैं हम. Traffics daily traffic can also be the example of this. And फिर बोला है globalization, increased competition, and high amount of social pressure. Everywhere there is the pressure. हर जगह भाग दौड़ी लगी हुई है, हर इंसान को पहले जाना है. If you will go to the bank, there also you will find a huge amount of line. So वहाँ पे भी stress हो सकता है. Traffic jam is a daily cause of stress. So these social issues can be the conditions of social stress. Now the last and second last question: list the limitations of the physiological measure, and the limitations of physiological measure are as follow. The very first, the whole process of taking the psychological measure could create stress in the individual, as either the blood test is taken out or the individual is plugged to the machine. The test could also be costly and time consuming, and the psychological change may occur due to some other reasons and not stress. तो psychological limitations यहाँ बोले हैं, limitations of psychological measures. तो limitations of psychological measures जो हैं उसमें है सबसे पहला कि साइकोलॉजिकल चेंजेस में अकर ड्यू टू सम अदर रीजंस एंड नॉट स्ट्रेस. ज़रूरी नहीं है कि कोई भी साइकोलॉजिकल चेंज अगर हो रहा है तो स्ट्रेस की वजह से ही हो, उसका कोई और भी रीज़न हो सकता है. पूरा जो प्रोसेस है साइकोलॉजिकल मेजर का, ये स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल में. जैसे कि अगर उससे हम ब्लड ले रहे हैं या द इंडिविजुअल द पेशेंट इज प्लग्ड इनटू द मशीन. नाउ टेस्ट कुड ऑल्सो बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. अब कोई भी टेस्ट टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, वो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा. So these are the limitations of psychological measures. Now, what is psychological taste? Psychological taste can be explained as the measure of sample of behavior is objective and this systematic in nature. So कोई भी इंसान अगर कुछ बिहेव कर रहा है, जो बर्ताव कर रहा है, वो नॉर्मल है कि नहीं है, वो नॉर्मल है कि वो नॉर्मल है, उसमें स्ट्रेस
स्ट्रेस लेवल उसका कैसा है, सो उसका टेस्ट जब हम करते हैं, दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट हम उसी के थ्रू उसका करते हैं. सो द बिहेवियर, सैम्पल ऑफ द बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव एंड द सिस्टमैटिक इन नेचर. सो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट. Now, uh, five questions, unit end questions. Explain the concept of stress, discuss the various types of stress, explain the various symptoms of stress, describe the source of stress, and explain the various ways in which stress can be measured. The first is concept of stress. So, these questions I will not discuss here because in the previous video from the guest paper question discussion, the whole question has been explained well. Whole question is being explained well, that what is the concept of stress. So you all can visit that lecture. Now discuss the various types of stress. Various types of stress में बहुत सारे types of stress आएंगे. And the very first is eustress. When stress can be good stress, that is explained as a eustress. Eustress can be defined as a good stress caused by positive response to desire the stress, such as reading or a new job. Stress doesn't mean कि it comes only in a pressure. Sometimes in a when good opportunities are coming in life, then also stress can occur. A new competitive platform can also create this. So जब वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जब स्ट्रेस पॉजिटिव है, दैट इज़ यू स्ट्रेस. और इसको गुड स्ट्रेस भी बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव डिज़ायर एंड कोई नया जॉब, नया वेडिंग, सो इसके वजह से क्रिएट होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड इट इज़ गुड स्ट्रेस नोन एज यू स्ट्रेस. द सेकेंड इज़ न्यू स्ट्रेस. जब भी स्ट्रेस हार्मफुल हो, वो हमारे बॉडी को नुकसान करे एंड वो नेगेटिव काम करे, वो नेगेटिव रोल प्ले करे, दैट इज़ कॉल्ड न्यू स्ट्रेस. थर्ड वन इज दिस दैट सॉरी जब वो हम करे, बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट करे, तब वो डिस्ट्रेस है, तब वो डिस्ट्रेस है. एंड वो कोई भी इंडिविजुअल में तब होता है बाय एक्सपीरियंसिंग इंडिविजुअल इज वेरी हाई और वेरी लो. एंड डिस्ट्रेस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू द एक्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेस. एंड एक्यूट स्ट्रेस कैन बी टर्म्ड एज स्ट्रेस दैट इज इंटेंस बट डज नॉट लास्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, वेयर इज द क्रॉनिक स्ट्रेस मे बी इंटेंस बट मे एग्जिस्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. तो डिस्ट्रेस अभी जो मैंने बोला, दैट इज नॉट न्यू, दैट इज नॉट न्यू स्ट्रेस, दैट इज डिस्ट्रेस. जब वो हार्मफुल हो, जब वो नेगेटिव हो, जब इंसान को हार्म करने लग जाए, तब उसको बोलेंगे डिस्ट्रेस. वो दो तरह का होता है. एक तो वो होता है एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस. तो एक्यूट स्ट्रेस का मतलब वो होता है जब हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है और इंसान को हार्म कर रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा देर तक उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं है. हाँ कुछ टाइम तक क्या, व्हेन द पर्सन चेंजेस सडनली, कुछ टाइम तक जो पर्सन है वो उस स्ट्रेस में रहे एंड फिर वो सडनली ही कम बैक टू हिज नॉर्मल बिहेवियर. सो दैट डजेंट टेक प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसको बोलेंगे हम एक्यूट स्ट्रेस. और जब कोई स्ट्रेस, कोई क्रॉनिक स्ट्रेस विच इज़ वो जो हार्म कर रहा है पेशेंट को, नेगेटिव है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो ख़त्म ही नहीं हुआ, वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक एग्जिस्ट कर गया. इट माइट बी लाइक फ्यू मंथ्स, इट माइट बी फ्यू ईयर्स. देन फिर उसको बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट. नाउ द थर्ड वन इज़ न्यू स्ट्रेस. न्यू स्ट्रेस का मतलब होता है द स्ट्रेस विच इज़ नीदर हार्मफुल नॉर इट इज़ हेल्पफुल. मतलब कोई स्ट्रेस जो हेल्पफुल भी नहीं है, जो हार्मफुल भी नहीं है, दैट इज़ न्यू स्ट्रेस. फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रेस इज हाइपर स्ट्रेस. हाइपर का मतलब हमेशा होता है ज़्यादा, और स्ट्रेस मीन्स समथिंग विच इज़ चेंजिंग योर नॉर्मल एक्टिविटीज़. सो हाइपर स्ट्रेस का मतलब हुआ एक्सेसिव स्ट्रेस इन टर्म ऑफ हाइपर स्ट्रेस, मतलब हद से ज़्यादा एक्सेस में स्ट्रेस लेना. हाइपो का मतलब होता है कम, तो हाइपो स्ट्रेस का मतलब हो गया इनसफिशिएंट स्ट्रेस इस टर्म इज हाइपर स्ट्रेस, मतलब बहुत कम स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस ले ही नहीं रहा है. इनसफिशिएंट स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस होना चाहिए उससे भी कम. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, दे इजीली हैंडल द सिचुएशन. यू माइट गेट स्ट्रेसफुल इन दैट कंडीशन, बट सम पीपल उससे बड़ा कंडीशंस पे भी हो सकता है स्ट्रेस ले ही ना. So these five were the types of stress which we have discussed.
And now moving to the third question, explain various symptoms of stress. So what are the symptoms of stress? Stress can have impact on various aspects of life. That includes the behavior, cognitions, emotions, as well as physical health. Though stress will have a different effect on different individuals, and each individual will react to stress in a different way. So there is a certain symptoms that can be related with the stress, and these are discussed below. The very first is physical symptoms, and then emotional, then psychological, then behavioral. सो बोल रहा है कि फिजिकल सिम्टम जो है स्ट्रेस का, उसमें लो लेवल ऑफ एनर्जी, स्टमक अपसेट, हेडेक, माइग्रेन पेन, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट, स्लीप लैक, ड्राइनेस इन माउथ, एक्सपीरियंसिंग टेंशन इन मसल्स, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस एंड सो ऑन होता है. फिजिकल सिम्टम का मतलब है आपके बॉडी में कोई चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से, जैसे माइग्रेन होना, हेडेक होना, चेस्ट पेन होना, ड्राइनेस होना, स्लीप का लैक होना, एंड एक्सपीरियंसिंग टेंशन इन मसल्स, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस एंड सो ऑन. ये सारे सिम्टम्स अगर आए दैट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल सिम्टम of stress. Now moving to the emotional symptom. The emotional symptoms include the displaying frustrations, getting irritated and agitated easily, feeling of worthlessness, feeling lonely, and even depressed. Something which is related to bad emotions, negative emotions like frustrations होना, irritate होना, वर्थलेसनेस का फीलिंग आना, लोनलीनेस फील करना, एंड देन डिप्रेस्ड फील होना. सो ये सारी फीलिंग्स इज द कॉज ऑफ इमोशनल सिम्टम्स. Then moving to the psychological symptoms. The congenitive symptoms related to stress include the worrying constantly, experiencing races throughout, lack of organization in thinking, forgetting, not able to focus, and lack of judgment in poor judgment, and also पेसिमिज्म. वेरी इजी. अगर कोई भी स्टूडेंट है, इसने कोई एक्सपेक्टेशंस किया कि उसको 90% लाना है, इट डजंट गेट दैट, सो दैट विल बी कि उसका वो दैट ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. सो दैट इज साइकोलॉजिकल सिम्टम. मीन्स कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट इट इज़ नॉट हैपनिंग इन आवर रियल लाइफ. इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सनस. इट मे बी different for a businessman, it will be different for a student. Expectations of people are different, so their frustrations level will be different, and psychological symptoms definitely will be different also. Now the last one is behavioral symptoms. The behavioral symptoms of stress includes the deteriorations of performance effectiveness and illness in substances use, and prone to accidents, nervous mannerism, poor time management, displaying checking rituals, change in appetite, procrastinations, eating faster, even talking or walking faster, impaired speech, and so on. So बोला है कि इसका जो कारण है, इसके जो रीजंस हैं, ये बिहेवियरल सिम्टम्स के जो रीजंस हैं, तो वो रीजंस क्या क्या इंक्लूड कर रहा है कि इंसान के व्यवहार में चेंज आना. क्योंकि ये क्या है, बिहेवियरल सिम्टम्स हैं. तो स्ट्रेस के बिहेवियरल सिम्टम्स के मतलब अगर स्ट्रेस हुआ और इंसान का बर्ताव या बिहेवियर, यानी उसका जो आदत है वो चेंज हो जाना. जैसे कि वो वॉक करेगा फास्ट, ईट करेगा फास्ट में, एंड बात करेगा फास्ट में, एवरीथिंग विल बी लाइक फास्टर देन द नॉर्मल थिंग. फिर उसका टाइम मैनेजमेंट भी पुअर होगा. सो these are some reasons. Again we are repeating the types of stress and their symptoms. The first is physical. क्या हो जाएगा इस पे? Rapid pulse, pounding heart, increased perspiration, tension of arm and leg muscles, shortening of breath, gritting of teeth, headache, indigestion, ड्राई माउथ पेन, कोल्ड स्वेट, एब्डोमेन क्लैम्प. ये सारी चीज़ें हो सकती है फिजिकल के कारण. नाउ द सेकेंड इज साइकोलॉजिकल. फीलिंग अपसेट, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वरी, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, रेसिंग थॉट्स, एब्सेंट माइंडनेस. इमोशनल में क्या, इमोशनल स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं? एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, एंगर, गिल्ट, जेलसी, सेम, इम्पेशेंट, सुसाइडल फीलिंग्स. ये सारे इमोशनल कारण हो सकते हैं स्ट्रेस के. बिहेवियरल के कारण क्या हो जाएगा? डिटरेशंस इन परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, यानी जितना वो एक्सपेक्ट किया था उतना परफॉर्मेंस उसका हो नहीं पाना. इस स्मोकिंग और यूज ऑफ एल्कोहल एंड अदर द रिक्रिएशनल ड्रग्स, एक्सीडेंट, नर्वस एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ईटिंग, एनोरेक्सिया जिसको हम बोलेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज इन स्लीपिंग जिसको स्लीप डिप्रेशन बोल सकते हैं, फोबिया किसी चीज़ से डर लगना, ईटिंग, वॉकिंग, हर चीज़, टॉकिंग फास्टर, पुअर टाइम मैनेजमेंट, इम्प्योर्ड स्पीच, चेकिंग रिचुअल्स, इम्प्योर्ड स्पीच एंड चेकिंग रिचुअल्स. सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स of behavioral, emotional, psychological and physical symptoms of stress. Now we will move to the next question. Describe the source of stress. So what is the source of stress? कहाँ से stress create हुआ, कहाँ से stress पैदा हुआ, कहाँ से stress आया? As we have developed a clear idea about the concept of stress, concept of
stress and the nature of stress, we will now move on to the source of stress. So as such, the source of stress can be categorized, it can be categorized into three main sources, namely the frustrations, conflict and motives and pressure. The first is frustration, then conflicts of motives, और फिर उसका भी बहुत सारा पार्ट्स है. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, avoidance conflict, approach avoidance conflict, multiple approach avoidance conflict, and so on. So the first one is frustration. Frustration can be described as occurring when a goal-oriented behavior of an individual is thwarted, as stated by Mangal. A wide range of environment obstacles, both physical and social, and the internal factors of form of personal limitations, biological conditions, and psychological barriers and may lead to frustrations of our need. Now motives and effort. For example, Ravi expected his promotion, however he did not receive it. मतलब जैसे कि मैंने कहा, कोई इंसान का कोई expectations level का रखना and then वो पूरा ना होना, that will give him frustrations, and वो अलग अलग persons के लिए अलग अलग होगा, and that is again the source of stress. The very first source of stress, that is frustrations. Now the next source of stress, conflict of motives, and उसके sub parts. And the last question, explain various ways in which stress can be measured. We will discuss in the next video. That's all for today. Thank you everyone.